Hello, good afternoon. गुड आफ्टरनून मैम। माने ऑडिबल होची तो आज्ञा शुभुची एक्टिव इम्यूनाइजेशन तापरे आपणकर कोन हबो ना प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट रे एक्टिव इम्यूनाइजेशन जोटा हबो तो प्रथम इम्यूनाइजेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट तो इम्यूनाइजेशन ने लिखिला इफेक्टिव वैक्सीन इज नाउ अवेलेबल टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज. The vaccine is generally given along the diphtheria and tetanus toxoid as a typical vaccine of DTP vaccine. जो DTP vaccine टा हमर 3टा डोज रे दिया जाए तो सेइथरे 1 to 2 months interval ले starting when the infant is about 6 weeks old. ठीक है 6 सप्ताह भितरे हमर DTP vaccine दिया जाए जोथरे कि हमर measles भी रहउची प्लस हमर whooping cough रहउची DPT vaccine and vaccine is administered intramuscularly as 1 to 2 months interval रे हमर सेटा 3टा doses दिया होउची 0.5 ml रे तापर education the parents of the infant should be educated about the danger of the disease गोटे माँ को आ तांगा पेरेंट्स को एजुकेट करिबा दरकार कि सेटा माने केते डेंजर हुपिंग कफ ता हमें जदि 21 डेज भितरे ताको कंट्रोल ले न रखिबा बा जिनस अवेयर न करिबा तो चाइल्ड रो डेथ हे पारे सेति पे आगे हमें जेहेतु छोटो चाइल्ड छोटो छुआ तो ताकू तो हमें एडवाइस करि परिबानी तो हमें तांकर पेरेंट्स को गाइड करिबा कि हाउ माने अवेयरनेस करिबा कि केमिति हमें हुपिंग कफ रु गोटे छुआ को माने डेथ ये रु हमें रक्षा करि परिबा to get their infants immunized. The government of India have now launched a massive education program through Mass India such as Doordarshan, All India Radio to educate the communities importance of immunization. Immunization ପାଇଁ କି ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ନାଟକ ହେଲା ଜନମଞ୍ଚ ହେଲା ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ବହୁତ awareness ହଉଛି କାରଣ whooping cough ରେ ହିଁ ବହୁତ ଛୁଆଙ୍କର ଡେଥ୍ ହୁଏ ବର୍ଷରୁ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ପିଲା କାରଣ ସେମାନେ ଯେହେତୁ କିଛି କହିପାରନ୍ତିନି ତ ସେଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କର କଫଟା ଏତେ ବଢ଼େ ଆଉ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କିଛି କରାଯାଏନି ତ ଛୋଟ ଛୁଆ କିଛି କହିପାରୁନି ବୋଲି ତାର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ବୋଲି ସେମାନେ ଲେଟ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଡେଥ୍ ହେଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ କି ଆୱାର କରିବା କି ଛୁଆର ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟେଜେସ୍ 7-3 ୱିକ୍ସ ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ରନିଂ ନୋଜ୍ ୱିଥ୍ ଲାଇଟ୍ କଫ୍ ହେଲା ତ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆମେ ଡକ୍ଟର ଆଡଭାଇସ୍ କରିବା ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ସ ଡକ୍ଟର୍ସକୁ ଦେଖେଇବା ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ସେ ପୁରା ଇନଫାଣ୍ଟ ଅଛି ବା 1 ଇୟର ତଳକୁ ଅଛି ବ୍ରେଷ୍ଟ ମିଲ୍କଟା ଏନି ହାଉ ତାକୁ ଦେବା ଯଦି ସେ ନ ନେଇ ପାରୁଥିବ ତାକୁ ଡିସ୍କାର୍ଡ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ଏନି ହାଉ ତାକୁ ଦେବାକୁ ଅଛି କାରଣ ବ୍ରେଷ୍ଟ ମିଲ୍କରେ ଆଣ୍ଟିବଡିଜ୍ ଅଛି 1 ଇୟର ପରେ ଯୋଉଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଫିଡିଂ କରାଇବା ଓରାଲି ଯେମିତି କରିବା କଥା ପୋରେଜ୍ ଫର୍ମରେ ହଉ ଇଏ ଫର୍ମରେ ହଉ ଦେବା ତା ସହିତ ମେଡିକେସନ୍ସ ବି ଦରକାର ଆଉ ଜନ୍ମରୁ ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦରକାର ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ଦରକାର ସେଇଟା ମନ କରିକି ସବୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଯୋଉଠି ଦିଆହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଜ ହଉ ତ ସେଇଠି ଯାଇକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଦେଲେ ହୁପିଂ କଫ୍ଟା ହେଇନଥାଏ ତ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ତାପରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ଯୋଉଟା କୁହାଯିବ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ରୁମ୍ରେ ରଖିବା ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ମାନେ କ୍ରାଉଡେଡ୍ ଏରିଆରେ ତାକୁ ନେଇକି ନ ଯିବା ବା କ୍ରାଉଡେଡଲି ସେ ପିଲାକୁ ମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ନ ରଖିବା ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେବା ପ୍ଲସ୍ आइसोलेटेड ऑफ केसेस आइसोलेटेड गोटे रहिला आइसोलेटेड रु हुपिंग कफ स्प्रेड आउ हबनी कि एंडेमिक हबनी तीनटा जिंस एक्टिव इम्यूनाइजेशन हेल्थ अवेयरनेस आ गोटे हला आइसोलेशन आइसोलेटेड करिकि रखिबा ए तीनटा आ ता छडा हमकु मेडिकेशंस रो हेल्प निहाती दरकार एंटीबायोटिक्स चलिबो फीवर पाई कि एंटीबायोटिक माने हमरो मेडिसिन्स चलिबो प्लस गुड न्यूट्रिशन आइदर ब्रेस्ट फीडिंग करिबा नॉन ब्रेस्ट फीडिंग पाई कि हमें किछि न्यूट्रिशनल फूड पोरेज टाइप रो हो लिक्विड टाइप रो हो जेकोसी टाइप रो जमती छुआ खाइबा दरकार तो इटा हला ता मैनेजमेंट देन यूनिट 16 इज डिप्थेरिया टिटनस एंड पोलियोमियलाइटिस गोटे हला पोलियो गोटे हला डिप्थेरिया गोटे टिटनस तो आमे कोन फास्ट पढिबा ना 16.2 इज डिप्थेरिया डिप्थेरिया इज ए कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज Diphtheria is an infectious disease. The available data indicates a declining trends of diphtheria in India. So, सेठी कौन करिबा ना the disease what causes it, who gets it, how and when does it spread. Diphtheria is caused by Corynebacterium diphtheria, a non-motile but non-motile माने not movable organism. The organism produces a powerful toxin
थ्री टाइप्स ऑफ डिप्थेरिया बैसिली एंड डिफ्रेसेटा तीन प्रकार डिप्थेरिया ये अच्छी गोटेला ग्राविस गोटेला मेटिस आ गोटेला इंटरमीडिएट तीन प्रकार तो फर्स्ट ग्राविस इज कॉजिंग सीरियस टाइप ऑफ डिजीज generally accounts for about a fourth of the cases of diphtheria प्रति 10 जन रे 4 जन को मृत्यु होता है causing milder type of infection contributing about 60% of the cases 60% cases infected होइथांती mitis रे बा mitis ताकू कहंती intermediate हला this account for about 10% of the एटा 10% diphtheria जति एई भलिया आपन को माने ऑर्गेनिज्म अफेक्ट करूची इंटरमीडिएट टा जोटा सेटा आपन जानिबे कि जस्ट आपण सेथरु ये करि देबे किंतु ग्राविस टा हला वेरी सीरियस एंड डेंजरियस सेथरे आपनकर अर्ली ट्रीटमेंट इज नेसेसरी हु गेट्स द डिजीज एज हला डिप्थेरिया इज प्राइमरी चिल्ड्रन अंडर 15 इयर्स ऑफ एज 15 वर्ष तळ को जो छुआ रहंती तो सेमान को डिप्थेरिया बेसी हुए बिलो एज ऑफ 6 मंथ्स रेयरली कम अप्रोच बेसी रेयरली हमें देखु जंती कि पिंक ऑफरिका हला ये सब जिनस गुड़ा जमी आमर जन्म रु 1 ईयर भितर बेसी एफेक्टेड किंतु 6 मास भितर क्या एत रेयरली देखा जाए तो डिप्थेरिया सब बेले अंडर 15 इयर्स भितर आसे द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑब्जर्व अमंग द प्री स्कूल चिल्ड्रेन जोटा माने 0 to 5 इयर्स भितर जो चाइल्ड गुड़ा था तो से डिप्थेरिया रे बेसी एफेक्ट होती It can occur in adults who have not been immunized under their childhood. जदि diphtheria vaccines से माने नहीं नहंती childhood रू तो adult cases रे सेठी देखा जाए. It affects both the sex equally. से both male female को हुए. Cases of diphtheria are reported in all the seasons, but higher number of cases reported during August to October. August to October रे diphtheria रो contamination टा बेसी देखा जाए. How does it spread? Diphtheria spreads usually by contact with a patient or a person having inapparent infections without any recognizable clinical signs and symptoms. तो एटा गोटे पर्सन रु पर्सन स्प्रेड हुए कांटेक्ट रे आसिले थ्रू द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और इन्फेक्टेड डस्ट एटा ले एयरबोर्न डिजीज तो ड्रॉपलेट रु भी हुए हाथ मिलेले मध्य जदि से छिंकी थिबो हाथटा को तमे हैंडशेक कलो तो सेठू भी हबो प्लस पाखे जदि ड्रॉपलेट्स रे कफिंग स्नीजिंग टॉकिंग रे भी गला तो सेथरे भी हबो और इन्फेक्टेड थ्रू डस्ट रे मध्य हबो It can be transmitted in raw milk contaminated with discharges from the patient is consumed. माने से कोची रॉ मिल्क कंटामिनेटेड माने धर जने गाई जो माने रखिथिबे तो से माने मिल्क कलेक्शन करंती गाई ठू तो जते बळे गाई ठू मिल्क कलेक्शन हैला बळे जदि ताकू डिप्थेरिया थिबो सी जदि सेठी कफिंग बा स्नीजिंग किछि भी करला तो से मिल्क टा अफेक्टेड हैला तो रॉ मिल्क कंटामिनेटेड विथ डिस्चार्जेस फ्रॉम द पेशेंट इज कंज्यूम्ड तो जदि तते रहिला तो कंज्यूम हैला पर जदि के से खीरोटा यूज कला तो से भी इन्फेक्टेड हबो इंडिया वेयर मिल्क इज इनवेरिएबल बॉइल्ड बिफोर सेति पई कहंती जते बेले कंचा खीर पीला माने बा रॉ मिल्क नेला परे ए बडा इन्फेक्शन स्प्रेड हेथाय सब बेले ताकू पैस्चराइज फॉर्म रे बा बॉइलिंग फॉर्म रे नेबे तो सेति पई कि हमर जो ओमफेड की गवर्नमेंट रो जो भी मिल्क सब हमर मार्केट को आसुची सब पैस्चराइज फॉर्म रे आसुची कारण जे भी मिल्क कलेक्शन करिके देइथिबो ताकू जदी डिप्थेरिया बा किछि इन्फेक्टेड बा कम्युनिकेबल डिजीजेस थिबो तो सी जदी कलेक्शन कला बेले हाथ ये रे हो कि स्नीजिंग हो कि कासी देला कि छिंकी देला कोन भी कर देला तो रॉ मिल्क जो माने नबर अभ्यास रखिचन केते जण तो सेमान को बेसी इन्फेक्शन हुए तेणु करी सब बेले आमे ताको बॉइल्ड फॉर्म रे नबा बिफोर कंजम्पशन वी शुड बॉइल द मिल्क ट्रांसमिशन ऑफ मिल्क इज नॉट लाइकली टू अकर इन रेयर टू कंटैक्ट द डिजीज बाय हैंडलिंग आर्टिकल्स सॉइल्ड विथ डिस्चार्जेस फ्रॉम द लिसन्स इन्फेक्टेड तो तांकर मेडिकल यूज रो बेसी आसे ड्रॉपलेट्स रो तो ऑर्गेनिज्म आर समटाइम्स एंटर थ्रू द वुंडेड स्किन एंड लीड टू इन्फेक्शन आउ बेले बेले कोन हुए जदि आपण किछि ओपन वुंड अछि बा घा अछि जोटा ओपनली अछि तो जदि सेइथरे मध्ये से ऑर्गेनिज्म टा स्प्रेड होबार चांस है इनक्यूबेशन पीरियड हला 2 रु 5 दिन कम्युनिकेबिलिटी हला 2 वीक्स Suspectable in infant born to mother who are immune do not get the disease during the first 6 months in their life. Attack of diphtheria is not followed by long-lasting immunity case of measles. तो इटा देखा जाइछि have given diphtheria toxoid. Prolonged active immunity can be introduced to toxoid medicine toxoid भी नियंती diphtheria ପାଇଁ कि किंतु जो माने इम्यूनिटी डाउन थाए से माने को बेसी अटैक करे symptoms and complications हला आमर से एका which affect the nose throat and tonsils
The bacilli multiply at the site of implantation, insertions into the body. To be throat, nose or tonsil. एटा airborne disease. तो आमर सेटा नाकबाटी जेतबेले रेस्पिरेशन रे जाए तो सेतबेले सेटा आसे तो सेतिपाई कि तीनटा जिनिस को अफेक्ट करे. टॉन्सिलाइटिस हुए कारण जेतबेले थ्रोट रे जाई कि पहुंचे तो टॉन्सिल टा को इन्फ्लाम करे दे पता आमे ताको टॉन्सिलाइटिस कहूछु. नोज इन्फ्लामेशन कराए, थ्रोट इन्फ्लामेशन कराए. So it produces local lesions at the site of implantation. So these lesions is characterized by formation of patch or patches, raised false membrane affected part of such a tonsil, larynx. तो ये सब जिनस इन्फ्लामेशन हो जाए से कि आम किसी खाद्य पानी ये सब ढोकी पार न था कारण से इन्फ्लाम्ड रेडनेस थाए. ऑफेंसिव स्ट्रॉन्ग ऑर्डर देयर कैन बी रेडिंग एंड स्वेलिंग सराउंडिंग टिश्यू से टॉन्सिलटा पूरा स्वेल होगी पूरा फुली जाए. तो से किसी गोटे स्मेल भी आसे गोटे जमी पस है पूज हो गला जिनस ये है स्मेल आसे सेमती आसे. द थ्रोट इज मॉडरेटली सोर व्हेन डिप्थेरिया अफेक्ट्स टॉन्सिल्स. जितेबले माने जितेबले माने मॉडरेटली बा अल्प टिके सोर होइतिबो सेतेबले डिप्थेरिया ये कौन करिवो ना ऑर्गेनिज्म कौन करिवो ना टॉन्सिल को अफेक्ट करिवो विथ स्वेलिंग ऑफ द सर्वाइकल लिम्फ ग्लैंड्स. पूरा टॉन्सिलटा कला माने एटा चोक हे जाए. डिप्थेरिया अफेक्ट लैरिंग्स सीरियसली पर्टिकुलर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेन. छोट पिलांकर लैरिंग्स बा स्तोर ग्रंथि जोटा थाए जोटा कथा कहले हमें सुबे तो सेटा को बेसी अफेक्ट करे. मोस्ट अफेक्ट एटा बहुत स्वेलिंग हो जाए से डेथ मध्य हुए कारण से ना खाई पारे ना रेस्पिरेशन ना किछि हुए नि अनइजी फील करे तो डेथ हो जाए कारण बहुत जब इन्फ्लाम्ड होगी स्वेलिंग हो जाउची. नासाल डिप्थेरिया एटा थ्रोट रे हला. नासाल डिप्थेरिया जदि हला यूजुअली ए माइल्ड कंडीशन मार्क्ड बाय वन साइडेड डिस्चार्ज इन द नोज. तो नासाल डिप्थेरिया जदि डिप्थेरिया ऑर्गेनिज्म जदि नाकरे किछि इन्फेक्शन स्प्रेड कले तो से गोटे साइड रे डिस्चार्ज हुए. जदि गोटे साइड माइल्ड कंडीशन हेतिबो तो जो साइड टा स्वेलिंग हेतो आ गोटे साइड रे से रेस्पिरेशन ने प्लस से पटे ही सब डिस्चार्ज आसे. You should always suspect diphtheria whenever the cause of sore throat is often, such as antibiotics is very important. Administration of antibiotics assuming ordinary sore throat, delay diagnosis. कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब ग्रो करती केबे भी से डिप्लेट करती कारण तांकर गोटे इनक्यूबेशन पीरियड्स थाए. तो 10 days भितर 7 days भितर से तांकर फर्स्ट फीवर क्रिएट करिकी इन्फेक्शन स्प्रेड करती. तो आमे कौन करवा ना ये सब जिनस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सहज आम रखिपर आइसोलेटेड रूम रे फर्स्ट रहा प्लस आम एंटीबायोटिक्स नवा जोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़े माने तार स्प्रेड करें इनक्रीज कर नंबर ऑफ इनक्रीज इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब है से ऑर्गेन्स को पूरा पूरी इन्फ्लामेशन पर डिस्ट्रॉय करदे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को रोकने एंटीबायोटिक्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो आपण किसी गोटे ईएनटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करके एंटीबायोटिक स्टार्ट करवा दरकार ताकू माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने. ता छड़ा आमर ये जिते इन्फ्लाम्ड होती आम कौन सॉलिड फूड ढुकी पारानी. तो आम से केसेस रे कौन करवा सब जिनस वार्म और लिक्विड फॉर्म रे नबा. प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट रे सब जगह आगे इम्यूनाइजेशन आम जब फर्स्ट टीका नहीं तो से गोटे आमर गोटे आमर प्रोटेक्शन पॉइंट रहा सहजरे गोटे माइक्रोऑर्गेनिज्म जदि एंट्री भी करदेला तो से स्प्रेड हो पार ना कि तार कौन सी जिनस से एफेक्ट पकई पार ना वैक्सीनेशन पाए. तो इम्यूनाइजेशन इज वेरी इंपोर्टेंट. प्रिवेंटिंग द डिजीज इज वेरी एक्टिव इम्यूनाइजेशन ऑफ डिप्थेरिया टॉक्साइड टू गिव इन पॉपुलेशन. समस्त डीपीटी रे हमर डिप्थेरिया भी आसुची. डिप्थेरिया पोलियो टिटेनस ये तीनटा जगह पे डीपीटी हमर तीनटा वैक्सीन दिया जाउची और ट्रिपल एंटीजन अमंग द इम्यूनाइजेशन ऑफ व्होपिंग कफ टिटेनस. डिप्थेरिया व्होपिंग कफ टिटेनस एथि दिया जाउची. तो समस्त मन करिक इम्यूनाइजेशन सब जगह रे दिया जाउची. तो यहाँ देले डिप्थेरिया रो एमती माने कॉम्प्लिकेशंस देखा जाएंगे. आइडेंटिफिकेशन सस्पेक्टेबल ऑफ द केसेस देयर इज अ टेस्ट टू फाइंड आउट इंडिविजुअल वाज सस्पेक्टेबल टू डिप्थेरिया. सेटा को कहंती को टेस्ट ना सिक टेस्ट गोटे अच्छी. सिक टेस्ट रे कौन हुए ना से हमर जना पड़ जिवो डिप्थेरिया रो ऑर्गेनिज्म अच्छी कि नहीं. तो जदि आमे सेटा टेस्ट करला परे सक्सेसफुल इम्यूनाइजेशन एंड द टेस्ट टू बी एटा करला परे तापर मेडिकेशन स्टार्ट हबो. Then prevention is surely better than cure. आमे जदि सबु जिनस को मिक्स करके नबा तेबे जे के आमे ताको कंट्रोल करि परिबा. तेनु करी समस्त आगे इम्यूनाइजेशन प्रति आगे ध्यान देबे तापर आइसोलेटेड करके रखिबे
तापर आपण गुड न्यूट्रिशन नेबे प्लस मेडिकल एडवाइस नै कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंट्रोल करबा को हम चेष्टा करबा। मैनेजमेंट ऑफ डिप्थेरिया इन केस ऑफ सस्पेक्टेड हैविंग डिप्थेरिया एंटी टॉक्सिन शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड विदाउट वेटिंग फॉर ए बैक्टीरियोलॉजिकल कंफर्मेशन। तो काले सेटा स्प्रेड बहुत जल्दी हो गला पर डेथ हो कारण एटा चोक हो जाए इन्फ्लेम्ड हो केते बड़ फुली जाए तो सेति पई कि हमें एंटीटॉक्सिन्स शुड बी एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देबा कथा। So when in case of diphtheria, we should arrange the injections of antitoxins to the patients. तापरे investigation antibiotics cover हबो 5 days रो। तापरे हमें कौन करिबा ने should practice to administer 1000 to 2000 units of diphtheria antitoxin to household contact to recent in contact of the diphtheria। तो ए सब जिंस कले हमें ताकू कंट्रोल रे रखि परिबा। Then 16.3 is tetanus. Tetanus commonly known as lockjaw as an ubiquitous but common disease occurring in almost all the countries of the world. Tetanus सब जगह रे हुए। Rate of infection, tetanus and consequent death rate are however very high in tropical countries. तो बहुत high हुए। तो tetanus is induced by a toxin produced by Bacillus Clostridium tetani। तो ए सब ऑर्गेनिज्म ना सब मन रखिबे। टिटानस पई कि के कारण आउ हमर हुपिंग कफ पई कि को ऑर्गेनिज्म रो हमर ये रहउचंती। तो ए सब जिंसडा मन रखिबे बैसिलस क्लोस्ट्रिडियम टिटानी। द ऑर्गेनिज्म ग्रोस एट द साइट ऑफ इंजुरी अंडर एरोबिक बा लैक्स ऑफ ऑक्सीजन कंडीशन रे ही सेठी ऑर्गेनिज्म ग्रो करंती। मु कहि छिबा जोठी ऑक्सीजन हमर सैचुरेशन फॉल कला सेठी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करंती। सैचुरेशन जोठी फॉल कला तो द बैसिली फॉर्म स्पोर्स एट द टर्मिनल सेति पे हम कहंती वेल वेंटिलेटेड रूम रे रहिया पे। वेल वेंटिलेटेड रूम रे रहिले हमर एयर जेतोले आसीबो ऑक्सीजन प्योर ऑक्सीजन पाइबा सेठी एई सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड करि पारंती नाही जिबे बॉडी को कारण एटा एयरबोर्न डिजीज माने निहाती हम पाका पाकी रहिले तो क्राउडेड फॉर्म रे रहिले पाका पाकी रहिले हमर हबो। तो हेले किंतु जदि वेल वेंटिलेटेड रूम रे रहिथिबे प्योर माने प्योर ऑक्सीजन जोठी कि हमर ग्रीन लीफ रे माने जो गछ पत्र बहुत थिबो तो से जगह माने करे बेसी बॉडी रे स्प्रेड हि पारंती नाही। ड्रमस्टिक अंडर द माइक्रोस्कोप thus the organism appears as a drumstick under the microscope रे देखिले the spore germinate in an anaerobic condition and the bacillus produces and potent toxins. The tetanus bacillus is normally inhabit to the intestine of the animals such as cattle, horse, goats, etc. ए सब ऑर्गेनिज्म कोन होंती ना माने एनिमल्स जो माने कैटल्स अछंती हॉर्स बा घोड़ा गोट्स ए सब जिंस हम जोटा पाळू घरे तो तांको इंटेस्टाइन रे हुए। कंटामिनेशन विथ एनिमल डंग देयरफॉर इज इंपोर्टेंट कॉज ऑफ टिटानस। सेति पे कहंती गोबर सबु माने एनिमल्स इंटेस्टाइन रे जेहेतु से ऑर्गेनिज्म थाए जते बळे तांकर डंग्स बा हला तो सही सब जिनस गुड़ा कौन हुए ना कंटामिनेशन आम जदि नहीं से आगु घर लिपुले गोबर आनी घरे रखुले पवित्र कहीकि सबुआड़े पकाउले से कंटामिनेशन होता। तो से हु गेट्स द डिजीज एज टिटानस इज ए डिजीज ऑफ एक्टिवेज बहुत जल्दी हुए एक्टिवेज थ्रू इट इफेक्ट सब प्रकार ग्रुप रो हो जाए आ एक्टिव डिजीज एटा संग संग ऑर्गेनिज्म टा सब श्रेणी लोकों को एफेक्ट करे। जनरली इट इज कॉमन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 40 इयर्स 5 वर्ष रु 40 वर्ष भितर ए कंटामिनेशन जो माने आसीबे तो से मन को सहजरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ता बॉडी रे एंटर कर जाती। दिस एज ग्रुप जनरली इन predisposed to all kinds of injuries and risks of occurring tetanus is higher. In India, tropical countries, tetanus of the newborn infant is very common due to bad hygienic practices followed during delivery. जिते बड़े डेलीवरी टाइम रे आगु आमर गाँ मानक सब ड्राई रोते डायास तक कहती से माने सब माने असना कपड़ा यूज करती हाथ भलरे धोई न था माने गोटे अनहाइजेनिक जो एनवायरनमेंट रे जतले छुआटा हुए से छुआ को टिटानस हो जाए। तेणुक आजिकल सब गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट सबुठी सेफ डेलीवरी करा जाउची एक्सपर्ट्स का अंडर रे तो सेति पई कि एटा कमुची। तो आम जिते रूराल बेसिस रोचु सेठी मध्य आमर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो माने आमर माने कौन से कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स अच्छी
हॉस्पिटल्स अच्छी कुआ जाउ सेठी सेफ डिलीवरी पे सेठी को फास्ट जानतो हाइजीनिकल प्रैक्टिस नले बहुत बड़ा न्यू बॉर्न चाइल्ड को डेथ हुए देन मैडम अब लोग गर्भवती मां को भी टीटी दिया जाउची ना हाँ टिटानस कपड़ लगेलानी कि सेठी करथेला ए सब कोला करला ड्यू टू फॉलोइंग हाँ सेठी पे टिप्पणी दिया जाउची प्रेग्नेंट मदर्स मन को तो माने ए सब जिनस अनहाइजेनिक जोटा प्रैक्टिसेस जोटा करंती रूरल एरियाज माने करे तो सेठी टिटानस रे छुआ न्यू बॉर्न बेबी जोड़ा बेसी डेथ करंती देन generally tetanus is more common in male than in female बहुत फीमेल अपेक्षा मेल माने बहुत अफेक्टेड होंती reproductive age group of 15 to 45 years females are at higher risk 15 ରୁ 45 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ରିସ୍କ ଥାଏ ଟିଟାନସ୍ ର ଦେନ୍ କ୍ରିମିନାଲ ଆବର୍ସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡେଲିଭରିଜ୍ କଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ ପ୍ରାଇମେରୀ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଦାଇ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ତ ସେଇଠି ବେଶୀ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତି ଛୁଆ ବି ମା ବି सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स आर मोस्ट कॉमन फैक्टर्स जो थे कि माने से माने बेसी मात्रा जैसे एग्रीकल्चर वर्कर्स आर ए ग्रेटर रिस्क ऑफ गेटिंग द डिजीज बिकॉज ऑफ देयर कांटेक्ट विथ सॉइल्स एंड एनिमल फिशेस माने जो माने चासी जो माने से माने जेतोले सॉइल कांटेक्ट रे आसंदी सेठी खत सब दियंती तो खत द्वारा जोटा एनिमल्स इंटेस्टाइन रे जदी ए ऑर्गेनिज्म ता क्रिएट होउची से माने तांको जदी ओपन वुंड थिबो कोन थिबो तो सेइथरे मदे इन्फेक्टेड होंदी प्लस किछि हाथ रे बा माने किछि गोटे कैरियर करिके आनंती ସେଥିପାଇଁ କି एग्रीकल्चर वर्कर माने ग्रेटर रिस्क बोली कुहाउचे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर हमें देखिया गले वाइड स्प्रेड पॉवर्टी हाई इलिटरेसी एंड कॉन्सिक्वेंट अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस लाइक अप्लाइंग ऑल सॉर्ट ऑफ मेडिकेशन समटाइम इवन फाइन सैंड्स पाउडर टू द वुंड विदाउट प्रॉपर्ली क्लीनिंग इट लीड्स टू टिटानस इन्फेक्शन बेले बेले गाँ मानक आम देखीचु जिते किसी गोटे घा खंडिया हो जाए से माने से माटी आनिकी तथे लगे दियंती कि रक्त सुखी जावाई तो से माने सेइथिपई तांको कुहा जायछि हाई इलिटरेसी माने जो मानकर माने किछि भी नॉलेज न थाए बा ज्ञान न थाए तो से माने माटी आनिकी बोले देले भाबंती कि सेटारे हम रक्त बंद हे जो कि सेथरे ही हमर जिंसटा स्प्रेड हुए जान ऑर्गेनिज्म टा से जो माटी रे भी सॉइल कांटेक्ट रे भी हुए तो सेतिपई कि बहुत लोक टिटानस रे ये होंदी wound without properly cleaning it lead to tetanus infection is low income families तो सेतिपई कि से माने से जो अनहाइजीनिकल प्रैक्टिसेस जोड़ा यूज करंती टिटानस टा बहुत जल्दी हुए हाउ डज इट स्प्रेड्स टिटानस ऑकर्स इन मोस्ट कॉजेस आफ्टर इंजुरी हैला परे हमें किछि जिंस अप्लाई कला परे ही टिटानस टा स्प्रेड होता है तो wound may be tribal and often are ignored and unnoticed जेतबेले से घाटा अलगा टाइप रो निए सेतबेले लोक माने ताको एते ध्यान दे नथंती प्लस जेतबेले बहुत सिवियर हो जाए तो इन्फेक्शन मु कहिछि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी स्प्रेड करी जानती तो सेतिपई कि अननोटिस this is more so among laborers infections takes place due to contamination of wounds with tetanus spores तो जो माने लेबरर थांती बा एमती माने मु कहली जेमती हाई इलिटरेसी जो माने इलिटरेसी बा स्प्रेड इन पॉवर्टी से माने इते ध्यान दियंतिनी गोटे घा हेची गोटे खंडिया हेची ताकू कोन से गोटे बढ़िला ये हला ताकू से माने ध्यान दियंतिनी तो सेति पई कि एटा बेसी स्प्रेड हुए ए मानको जगह रे माने लेबरर टाइप रो लोक एग्रीकल्चर ये रे जो माने करचंती जो माने बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन रे रहउचंती जो माने पूरा इलिटरेट तो से मानकटा बेसी हुए सॉइल कांटेक्ट जो माने बेसी आसंती टिटानस ऑफ द न्यू बॉर्न ऑकर्स थ्रू इन्फेक्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड्स जतले जन्म हला बळे थाए सेठु बेसी इन्फेक्शन हुए कारण सेटा मां टू छुआ रे कनेक्शन हे थाए सेटा ओपन हे के जतले अम्बिलिकल कॉर्ड ता थाए सेठी छुआ को बेसी इफेक्ट हे थाए ओपन हे के थाए तो सेठी जदी किछि गोटे कंटामिनेशन हला कि सब लोक आसी कि छुआ को धरिले कि कंटामिनेटेड पर्सन आसिला तो अम्बिलिकल कॉर्ड ता जेहेतु ता देरे अटैच थाए तो बहुत छुआ को हे जाय थाए अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस माने ताकू सेकीबा ताकू ये करिबा तादर तेल लगेबा तो अम्बिलिकल कॉर्ड जेहेतु थाए तो सेठी बेसी कंटामिनेटेड हे जाय अडॉप्टेड बाय अनट्रेन्ड बाथ अटेंडेंट व्हाइल कटिंग द कॉर्ड हला से जो अम्बिलिकल कॉर्ड काटिला बळे से जो अपरिष्कार हाथ फाथ यूज करिके जो करंती तो सेठी बेसी स्प्रेड हे जाय टिटानस में रिजल्ट आफ्टर सर्जिकल ट्रीटमेंट द स्पोर्स बीइंग इंट्रोड्यूस्ड थ्रू improperly sterilized
स्टर्निंग मटेरियल्स इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर्ली स्टेरिलाइजेशन न करिके गोटे जदि टेटानस रो अफेक्टेड पर्सन रे यूज हेतिबो प्लस जाके आमे ताको जदि स्टेरिलाइज न करिके आ गोटे पर्सन को यूज कर देउछु बा काटुची कुछ जहाँ भी करूछु तो से इन्फेक्टेड हला तो सेति पई कि से कहिछि सर्जिकल ट्रीटमेंट रे स्पोर्ट्स टा कैरियर हुए न्यूबॉर्न रे जतबेले अम्बिलिकल कॉर्ड कटा हुए सेतबेले अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस बा जो माने सब एक्सपर्टाइज अन एक्सपर्टाइज बार्थ अटेंडेंट्स मानक थ्रू रे हुए आउडला इनक्यूबेशन पीरियड्स हला से 21 डेज सबुरा इनक्यूबेशन पीरियड्स 21 डेज थाए डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर एक्सटेंट ऑफ द वुंड टा केते मात्रा रे बढ़ुची इज अबाउट 10 डेज 14 डेज ऑफ द वुंड्स एंड समटाइम्स इट मे टेक लॉन्गर तापर एटा कोन हला इट इज नॉट डायरेक्टली ट्रांसमिटेड फ्रॉम मैन टू ट्रांसमिटेड हुएनी everyone is susceptible to tetanus infections. Recovery from the tetanus does not result in definite protection against the disease. Second attacks can occur, however prolonged immunity is introduced by tetanus toxoid injections दिया जाए जेतबेले आमे देखिचंती जेतबेले हमर किछि कटि गला किछि गोटे जहा भी कोटे किछि इंस्ट्रूमेंट लागि कटि जाऊ कि लुहा जहा भी मेटल्स लागि कटि गला आमे संगे संग कोन करछु ना टिटीटा दउछु कारण दउछु एथि पई कि आमर सेटा बॉडी रे जाई स्प्रेड हे कि किछि माने ये न हो टिटानस तो सिम्पटम्स एंड कॉम्प्लिकेशन टिटानस इज एन एक्यूट डिजीज पेनफुल मस्कुलर कंट्रैक्शन माने से कोन करे ना जो धनु आकार रे बॉडी टा को बेंड कर दिए टिटानस ऑर्गेनिज्म जदि हम बॉडी को गला तो सेति पई कि मस्कुलर कंट्रैक्शन मे बी जॉ एंड नेक मसल्स देखंतु नेक मसल्स एटा सब एमते धनु टाइप ताको सेति पई ओडिया रे धनुष्टंकार गत्त कुआ जाए तो सेटा कौन हुए ना ट्रंक एंड स्पाइन फर्स्ट साइन सजेस्टिव टिटानस is rigidity tightening and abdominal muscles rigidity is confined at the site of injury only it is difficult to confirm the diagnosis through laboratory investigation since the organism rarely recovered from the site of एटा बहुत कष्ट रे सेटा सस्पेक्ट हुए बा आमे करू सेति पई जेउठी भी कटि जिवो घा हे जेतु ओपन थिबो जोठी भी आपण हे गेला सांग सांग आनी कि टिटानस टॉक्साइड टा दे देबे टिटीटा नहले एमिति भले बॉडीटा जस्ट एमिति बेंड हे जिवो हला टिटानस हैज ए हाई फर्टिलिटी रेट अबाउट 40 to 80% ऑफ द पेशेंट्स डाई कारण एमिति हे कि पेशेंट्स मरि जानती तो सेति पई कि हमकु टिटीटा नबा निहाती दरकार प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट हला एक्यूट इम्यूनाइजेशन ला मोस्ट इंपोर्टेंट हमें इमीडिएट 48 आवर्स भितरे ताकू टिटी दे देबा उचित The best protection against tetanus is through routine immunization with tetanus toxoid. Tetanus toxoid is recommended regardless of the age. It is particularly important for workers who frequently come in contact with soil or domestic animals and all those who are greater usually risk of traumatic injury. तो जेकोनसी इंजुरी हेले तो हमें नौ प्लस जो माने सॉइल कांटेक्ट रे बेसी आसंती बा डोमेस्टिक एनिमल बा जो माने सब रखंती गाई जो माने गाई रखंती मईसी बळद ए सब जिंस रखंती तो सेमानक इंटेस्टाइन जेहेतु सेटा प्रोडक्शन हुए तो सेमानक टीटी नै जिबा दरकार प्लस हमरो जो माने इंजुरी किछि हला एक्सीडेंटल केसेस रे भी नबा दरकार police personnel immunization are different individual include for children primary course the first course of immunization in children of immunization consists of 3 injections of tetanus a toxoid given as DPT with an interval of 4 to 8 weeks between injections starting from 6 weeks of age 6 सप्ताह माने एज रो आरंभ करी की बाय द बूस्टर डोज एट 18 मंथ्स जाए से दिया जाए सेकंड बूस्टर पुनी ताकू 5 to 6 इयर भितरे दिया जाए थर्ड बूस्टर टीटी आफ्टर 10 इयर्स 10 वर्ष भितरे सब जाको ए माने टीटी रो वैक्सीन ता सर जाए जा फल कि आगु को टिटानस रो complications एटा न आसु ए बूस्टर इज गिवन आफ्टर 1 इयर्स आफ्टर द थर्ड इंजेक्शन देन में छोट पिलांकर 5-6 इयर्स भितरे जदि किछि भी कटिगला तांकु आउ नबा दरकार नै जेहेतु तांकु ऑलरेडी माने कंटीन्यूअसली तांकर जो रूटीन चार्ट हिसाब रे वैक्सीन नियंती तांको तांकु दरकार पड़े for pregnant women all pregnant women should receive immunization as a protective measures against tetanus of the newborn infant तेनु गडे pregnant women मनु टीटी दिया जाए and immunize pregnant women 2 doses of tetanus toxoid should be given at the first early as possible during pregnancy day and second at least month after the at least of 3 week pare 21 days pare before delivery दिया जाए national immunization schedule 3 doses may be given between 16 to 36
हमर 40 वीक्स टा हैला लास्ट माने डिलीवरी रो टाइम तो 16 रु 36 वीक भितर से तीनटा डोजेस निए इंटरवल ऑफ 2 to 1 to 2 months between the two doses दी वन माने 2 मास भितर से दीटा डोजेस निए इन प्रीवियसली इम्यूनाइज्ड प्रेग्नेंट वुमेन ए बूस्टर डोज इज कंसीडर्ड सफिशिएंट temporarily protection can be given to wound individual by the injections of anti-tetanus serum. It should be administered only under the supervision of medical. आउ किछटा जहाँ भी आसी सब medical supervision under रे नबा दरकार. आउ ए tetanus ପାଇଁ कि immunization is most important. आउ education, health awareness, health education is very important. ସେଇଟା को हमको कहया को पड़िबो जो माने soil संगे रे माटी संगे रे बेसी काम करूचंती कैटल संगे जो माने इंटरलिंक्ड अच्छी बा घरे सबू माने पशु ये सब रखुचंती पेट्स मानू को भी रखुचंती ए सब जिनस जो माने कांटेक्ट रे बेसी आछंती नियंतु और जो माने केबे भी तांकर किछ एक्सीडेंटल हे जाउची बा कोन होउची तो सेही सब जगह माने करे नबा पई कि तांकू मोटिवेट करंतु ताकि हमर टिटेनस रो ये कॉम्प्लिकेशंस कमी जिवो प्रिवेंशन लाइक इम्यूनाइजेशन टा सबुट इंपोर्टेंट इम्यूनाइजेशन दियंतु आ प्रोवाइडिंग होम डिलीवरी किट एंड एजुकेटिंग ता जेतबळे घा हे जाउची खंडिया हे जाउची ताकू जहा नै ता पर रे पोछिया दरकार नै सबळे क्लीननेस ऊपर ध्यान देबे आ सेटा ही हमर टिटेनस रो ऑर्गेनिज्म को ताकू कंट्रोल करि होबो तो वुमेन आर द 3 क्लीन हैंड क्लीन डिलीवरी सरफेस एंड क्लीन कॉर्ड केयर इज इंपोर्टेंट प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ से गोटे देछि गोटे बढ़िया जिंस डेलीवरी किट रे गोटे एजुकेटिंग केमिति हमें माने गोटे प्रेग्नेंट वुमेन को हमें करबा अपन गोटे एंती गोटे चार्ट पेपर रे 3 क्लीन्स लिखि देबे विथ पिक्चर लिखि देबे क्लीन हैंड लिखि देबे कि सफा हैंड दरकार क्लीन डिलीवरी दरकार अंडर एक्सपर्ट माने पर्सन्स तापरे रहिला क्लीन कॉर्ड केयर जो अम्बिलिकल कॉर्ड टाकू केमती सेफ्टी भाबरे हमें जणे जे भी काटिबो से भी सेन हाइजीन मेंटेन करथो ए तीनटा जोगुरु माने हमरो टिटेनस टू गोटे प्रेग्नेंट वुमेन को हमें रक्षा करि परिबा विथ हर चाइल्ड ट्रेनिंग ऑफ ट्रेडिशनल बार्थ अटेंडेंट माने बार्थ अटेंडेंट जदि जो माने सब रहउचंती तांको बारंबार ट्रेनिंग दबा इन प्रॉपर वेज ऑफ कटिंग ऑफ कॉर्ड स्टेरिलाइज ब्लेड यूज करिबा फॉर कटिंग द कॉर्ड टू वॉश हैंड थॉरोली विथ सोप माने जेतेबेले अम्बिलिकल कॉर्ड को काटिबे सेतेबेले बिफोर शी शुड क्लीन हर हैंड विथ सोप सॉल्यूशंस तापरे भल्लो क्लॉथ रे ताको पोछिबे बा ड्राई अप कर देबा हम ड्रायर रे ड्राई अप करिवे तापरे यूज करिवे स्टेरिलाइज ब्लेड यूज करिवे गोटे ब्लेड रे समस्त को करिवेनी तापरे आउ तांको करा जिवो कि नॉट रिजर्व टू अप्लाइंग काउ डंग्स एक्सेट्रा माने से जो घरे जोठी डिलीवरी होउथबो छुआ रहउथबो सेही घरे गोबर रे लिपालिपि करिवे नाही कारण जेहेतु कैटल मानकर ये रे ऑर्गेनिज्म ता देखा जाए टू कट पोर्शन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड इज एसेंशियल टू प्रिवेंट टिटेनस इन द न्यूबॉर्न इन्फेंट जो माने मरि जाउछंती ए सब जिंस रे ए जिंस छोट छोट जिंस पई कि से माने टिटेनस रे मरि जानती तो ए सब जिंस हमें हेल्थ अवेयरनेस दबा then hence this should be given testing of such allergic reaction intramuscular penicillin is also recommended in severe cases artificial mechanical eta sabu management of tetanus re ame tetanus human immunoglobulin is given in large doses of intramuscular to the patient कारण intramuscular ame दउ कारण सेटा हमर मसल टा को पूरा बेंड कर दिए पूरा धनु भलिया तो सेतिपई किछि हमर मेडिकल ट्रीटमेंट्स अछि तो हमर अर्ली ए सब जिंस प्रिवेंशन इज मोर देन बेटर देन क्योर प्रिवेंशन हमें तांको प्रिवेंटिव मेजर्स हला एजुकेशन हला अवेयरनेस हला ए सब जिंस आगे करबा केमती हमकु टिटेनस टा इफेक्ट करबोने तापरे वैक्सीनेशन तो बहुत इंपोर्टेंट वैक्सीन सहित प्रिवेंटिव मेजर्स तांको कह देबे देन Poliomyelitis is an acute communicable disease. It is a communicable disease. It is an infection of the alimentary tracts, but affect the central nervous system, leading often to paralysis. Poliomyelitis रे कौन हुए ना organs रो movement बंद हो जाए, paralyzed हो जाए गोटे side organs. कारण एटा central nervous system हमर brain disorder रे हुए poliomyelitis. तो से नर्वस सिस्टम माने हमर जो नर्व सब रहिला नर्व गोटे साइड इनएक्टिव हैला माने ब्लड सर्कुलेशन हुएनी तो सेतिर हमर पैरालाइज्ड हे जे ऑर्गन तो सेटा हैला
It is linked to poliomyelitis. The result of attack of poliomyelitis in the childhood with the introduction of immunization. Immunization is very important. Polio vaccine daba. So the disease, what causes it, who gets it, and how it spread. Poliomyelitis is caused by virus which can be seen under the sophisticated microscope. Tini type of polio virus achi. Type 1, type 2, type 3 have been found to be responsible. Type 1 virus shows a preponderance during epidemic times and non-epidemic times. Polio virus are resistant to freezing and drying. Who gets the disease? In India, essentially a disease of childhood and infancy. It is childhood ba pura navjata शिशु मानकर थारे देखा जाए 90% of the cases occurs in children below than 5 वर्ष तळु छुआ मानकु देखा जाए जदि proper immunization न नेथिबो vaccine न नेथिबो 80% of the cases are seen below the age of 3 years. The most vulnerable age is between 6 months to 3 years. ता माने सबुठु मोस्ट इंपोर्टेंट एज को एफेक्टेड हुए ना 6 मास रु 3 वर्ष भितर से टाइम रे इम्यूनाइजेशन हमरो निहाते दरकार 15 years and above. Males are more prone to clinical attacks of poliomyelitis than females. Males माने बेसी affected होंती. For every case in females there will be approximately 3 cases of polio in males. Injury hela poliomyelitis associated with some injury of trauma such as injections, fractures, even surgical operation may be tonsillectomy भी कुहा जाइछि. तो हमरा इंजुरी रे कोन हुए ना पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस एसोसिएटेड कोन हुए ना ट्रॉमा इंजेक्शन फ्रैक्चर सर्जिकल ऑपरेशंस केते केसेस रे एटा सब करा जाय इंजेक्शन दिया जाय आ सर्जिकल ऑपरेशंस मध्ये भी माने निया जाय. Seasonal variations are striking. About 2/3 of the cases occurs during the month of June to September. एटा जून टू सेप्टेम्बर रे माइक्रो रेंज बहुत एक्टिव थांती. तो निया जायछि गोटे सीजनल वेरिएशंस पई कि जून टू सेप्टेम्बर. दिस अप्रोक्सीमेटली कॉरेस्पॉन्ड विथ द मानसून सीजन थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द कंट्री. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हला कॉन्ट्रास्ट टू मोस्ट ऑफ द डिजीज. पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस इज एसोसिएटेड विथ इंप्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड. केमती ना डायरेक्ट कांटेक्ट विथ सिक्रेशन फ्रॉम थ्रोट और फिशेस इन्फेक्टेड पर्सन इज यूजुअली मेथड ऑफ स्प्रेड ऑफ द डिजीज. एटा केमिति स्प्रेड होची ना हमर थ्रोट माने ऑइंठा खाइबा द्वारा फिशेस और इन्फेक्टेड पर्सन इज यूजुअली मेथड ऑफ स्प्रेड ऑफ द. आउ जदी बाहर जेंति ओपनली जेंति डिफिकेशंस जोटा कहितली बाहर मलमूत्र त्याग करिबा तो सेइथि पई कि जदी इन्फेक्टेड पर्सन रो स्टूल रे कांटेक्ट रे कि आसिले बा वाटर कंटामिनेशन हैला बा थ्रू फूड एंड वाटर रे हबो बा कहार ऑइंठा जदी हमें खाइलु बा थ्रोट इन्फेक्शन रो सेटा मते होई. It rare instance milk contamination virus. एटा milk contamination एटा देखा जायनी माने एटा माने हमें किछि सर्वे रु पाइनु. कैन बी ए व्हीकल. हां जति मिल्क ताको जण ऑइंठा करी कि पीला कि आउ जण को देला तेबे से केसेस रे हबो किनु मिल्क कंटामिनेशन रे आसेनी. Epidemiologic evidence suggests the oral spread through pharyngeal secretions is more important. एटा हला pharyngeal बा लाळो तो लाळ सेक्रेशन रो एटा बेसी हेतै सेति पे केकार ओंठा खाइबा उचित नाही कि छुआ को कहा को दबा माने उचित नुहे जदि वैक्सीन न नै चंती. When sanitation is good then the spread of fishes. जदि sanitation आपण कंस्ट्रक्टेड लैट्रिन्स जोटा सेफ्टी लैट्रिन्स यूज करूथिबे ओपन रे जाउ नथिबे तेबे मध्ये आपण माने ए स्प्रेड को रोकी परिबे. स्प्रेड फ्रॉम फिशेस मध्ये एटा स्प्रेड फ्रॉम स्पीसीज. ओरल स्प्रेड. Incubation period hela 7 to 12 days for a person to develop infection from time to time of first exposure. तो 7 ରୁ 12 दिन हला तार incubation periods and infections from the time to time of first exposure between 3 days to 2 weeks. Periods of communicability hela polio virus can be demonstrated as early as 36 hours in throat secretion and fishes 72 hours after infection. तो जदि थ्रोट एंड सिक्रेशन जो लाळो जो सिक्रेशन 36 आवर भितरे माने सेटा इन्फेक्टेड हे जिवो बा 72 आवर्स आफ्टर इन्फेक्शन माने हमर जो फिशेस बा जोटा झाडा. This is true not only in clinically apparent cases but also in apparent infection without any clinical manifestation. किछि clinical sign symptoms देखा जाय नथाय किंतु देखिला को सेत्रा हमर आमे ऑलरेडी इन्फेक्टेड बाय पोलियो
organism. Then the virus can persist in the throat for about 1 week. In case of feces, for 3 to 6 weeks, even longer. The polio cases are most infectious from 1 week to 10 days before and after the onset of symptoms. तो पोलियोटा आमको 3 to 6 weeks 3 ବା 6 ସପ୍ତାହ 42 days বা এই ভিতরে ଆମକୁ infections ହେଇଯାଏ throat ରୁ। Then symptoms and complications रे ହେଲା myelitis, poliomyelitis is an active viral illness कारण जेहेतु throat रू बा saliva रू होची तो एटा viral illness and inapparent infection without any clinical symptoms रे to a disease ending in paralysis किछि भी देखा जा नथिबो ସେଇଥିରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ପୁରା ପାରାଲାଇଜ୍ଡ ହେଇଯିବ ବା ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଚାଲି ପାରିବନି କି ତାର ସେଇ ମାନେ ସେଇ ଅର୍ଗାନ୍ସର ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ବା ମୁଭମେଣ୍ଟ ନଥିବ। ତ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଫାଷ୍ଟ ହେବ ଫିବର, ହେଡାକ୍, ଅପସେଟ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଇଣ୍ଟେଷ୍ଟିନାଲ ଟ୍ରାକ୍ଟ ବା ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ହେବ, ଫିବର ହେବ, ବହୁତ ଜୋରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ, ତାପରେ ଷ୍ଟିଫନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ନେକ୍ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ର ଯେମିତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯେମିତି କରୁଛୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନ ହେଇକି ଷ୍ଟିଫନେସ୍ ଆସିଯିବ। दिस डिजीज मे बी अकोम्पेटेड बाय तापरे स्टिफनेस माने पैरालाइज्ड आउ माने कुआडे भी माने गुडी जगह स्टिफ होइके रहिला। पोलियो वायरस एंटर्स द बॉडी थ्रू द एलिमेंटरी कैनाल एंड मल्टीप्लाइज इनहाली इन द फैरेंक्स। तो सी थ्रू फूड रे गला तो सेटा कोन हबो ना हमर फैरेंक्स रे एंड स्मॉल इंटेस्टाइन रे से ग्रोथ करिवो बा स्प्रेड हबो। इट मे एंटर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तापरे से कोन करिवो हमर सेंट्रल बा ब्रेन रे जाइकिस through the blood stream resulting in तापरे जतले सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जीवो तापरे से कोटोटा ऑर्गन पैरालाइज्ड करिवो। in the lower limbs particularly lower limbs माने particularly central nervous system को गला परे से इंडिकेट करिवो lower limbs टा पैरालाइज्ड हो मन सेटू सर्कुलेशन बंद हो। sometimes paralysis of muscles of respiration and swallowing can occur which will lead to death to the patient। तापरे गोटे कोन हुए ना जेहेतु एटा थ्रोट रे बा हमरो लैरिंग्स रे सेटा स्प्रेड हुए बेले बेले सेटा इन्फ्लेम्ड है कि रेस्पिरेशन कमी जे आ से माने से पेशेंट किछि खाई पारेनी एते इन्फ्लेम्ड है जबो ना पानी सुधा बळिबोनी से केसेस रे डेथ हुए। इट मे बी रिमेंबर अनअपेरेंट इन्फेक्शंस मे बी 100 टाइम्स फॉर द क्लिनिकल केसेस। ସେଥିପାଇଁ पोलियो वायरस कैन बी आइसोलेटेड बाय कैरिंग एंड सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टिगेशन टिश्यूज कल्चर सब होला परे तब सेटा कोन हुए ना इफ रेस्पिरेटरी मसल्स आर पैरालाइज्ड जदी इन केस लोअर लिम्ब सहित रेस्पिरेटरी टा जदी पैरालाइज्ड हे गला तो से केसेस रे डेथ हुए। तो तापरे swallowing or paralyzed may be threatening life। तो जदी रेस्पिरेटरी मसल्स जदी पैरालाइज्ड हे गला and child immediately can die माने सेति बळे मरि जाय। रेस्पिरेटरी जते बळे माने तार किछि भी सर्कुलेशन हेलानी कि संगे संगे हमरो निश्वास बंद हे जबो। तो सेति पई कि सेटा से देखंदी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पोलियो मायलाइटिस ता हला कॉम्प्लिकेशंस हला रेस्पिरेटरी मसल जदी पैरालाइज्ड हला मोस्टली सेटा कोन हुए ना हमरो लोअर लिम्ब पैरालाइज्ड हुए जतले सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जीवो फर्स्ट सेटा कोठी ग्रो करिवो थ्रोट रे तापर स्मॉल इंटेस्टाइन रे कोन हबो ना सर्कुलेट हे कि ब्रेन को जीवो ब्रेन इंडिकेट करिवो यू शुड पैरालाइज द लोअर लिम्स टा कॉमन हला लोअर लिम्स पैरालाइज हुए जदी इन केसेस कोठी कॉम्प्लिकेशंस रहिला कि से रेस्पिरेटरी मसल्स को पैरालाइज करला तो सेठी डेथ इमीडिएट किंतु ए पोलियो जदी लोअर लिम्स को कला तो डेथ हुएनी। तबरे नॉन पैरालिटिक myelitis may lead to aspectic meningitis हमरो माने सेंट्रल नर्वस सिस्टम रो इन्फ्लेमेशंस मध्ये हुए। पैरालिटिक केसेस में डाई इन 2 to 10% ऑफ पैरालिटिक केसेस में भी डाई यदि ब्रेन रो इन्फ्लेमेशन से सब हैला एटा हला कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गोटे हला रेस्पिरेटरी माने हमरो मसल्स पैरालाइज्ड आ गोटे हला ब्रेन मसल्स पैरालाइज्ड हेले मते डेथ दी प्रकार कॉम्प्लिकेशंस आसे पोलियोमाइलाइटिस रे माने कॉमन हला लोअर लिम्स पैरालाइज्ड। प्रिवेंशंस एंड मैनेजमेंट रे फास्ट हला एक्टिव इम्यूनाइजेशन जदी इम्यूनाइजेशन बा हम जदी वैक्सीन नै थिबा तेबे हमर ए वैक्सीन ता बॉडी रे गले भी स्प्रेड हबोनी इनएक्टिव हे कि आसी रहिबो। Immunization ପାଇଁ कि हमें कौन 3 types of polio virus is simplest method of prevention all children who are higher risk of catching the disease should be immunized
सबू आम अवेयर करवा आगे सबू इम्यूनिटी सेंटर जोड़ा सब अच्छी जो वैक्सीनेशन सेंटर अच्छी इमिडिएट जाइए सेठी किसी न जानले भी से गोटे इम्यूनाइजेशन कार्ड भी दि जाए कार्ड लिखाई जाए ये दिन ये दिन ये दिन ता छड़ा जो मैंने भी इम्यूनाइजेशन दौरान नर्सेस से आपन को माने ये भी करदेवे माने अवेयर करदेवे कि दिन आप वैक्सीनेशन अच्छी यू शुड कम टू द सेंटर एंड टेक वैक्सीन से मैंने कही भी देवे तो कार्ड भी देवे तो किसी नहीं सब प्रकार अच्छी किंतु आम यहाँ टे माने कम्युनिटी टे स्प्रेड करवा अवेयर करवा यू शुड गो टू द कॉमन हेल्थ केयर सेंटर एनी हेल्थ केयर सेंटर एंड टेक योर वैक्सीन एट राइट टाइम रे ही वैक्सीन नेबे राइट टाइम रे वैक्सीन न नेले किछ कारण सेते बळे हमरो इम्यूनिटी जेतला वैक्सीन नेला पर इम्यूनिटी स्ट्रांग होला पर कोनोसी ऑर्गेनिज्म वायरस एटा सब हम बॉडी को एंटर करले भी से एक्टिव हो पारिबनी तो फर्स्ट इज एक्टिव इम्यूनाइजेशन देन लाइव पोलियो वैक्सीन इन ओरल गोटे अच्छी ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन ता अच्छी पार्टी रे दिया जाए 7 वैक्सीन्स कहंती 7 वैक्सीन्स इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द reduced vulnerable strains of the 3 types of polio virus. In other words, virus much less than degree of pathologically 3 doses given by the mouth. 3टा डोजेस हमको माने मीठा जो पोलियो वैक्सीन का दिया जाए at 1 month interval. गोटे गोटे मास इंटरवल ले 3टा डोज दिया जाए. Infant is 6 weeks old. just 6 सप्ताह हेतिबो जो छुआ को तो से 1 month भितर गोटे डोज दे देले ओपीवी इज गिवन करेंटली डीपीटी बीसीजी साइमल्टेनियसली दिया जिवो विथ द फर्स्ट डोज ओपीवी डीपीटी बीसीजी ओपीवी सेटा एकाठी दिया जिवो इट इज इंपोर्टेंट टू कंप्लीट वैक्सीनेशन ऑफ ऑल इन्फेंट बिफोर 6 months 6 month भितर तीनटा जंती कवर होतो सेटा अवेयर करिवे डीपीटी बीसीजी ओपीवी वन बूस्टर डोज ऑफ ओपीवी इज रिकमेंडेड 12 to 18 months later तापर लास्ट 12 to 18 months later रे दबा booster is given about 1 year after the third dose रो 1 year after the third dose परे हमें आउटे booster dose टा दबा जोटा कि पूरा प्रोटेक्शन करिवो ए सब हमर इम्यूनाइजेशन जोटा अछि सेटा आपण किछि अंगनवाड़ी जानतु कि हेल्थ जोटा सब गवर्नमेंट रो जो हेल्थ प्राइमरी ये सब अछि तो सेठू गले से माने वैक्सीन चार्ट दे देबे तो चार्टटा माने जोटा रिसेंट चार्टटा तो गले सेठी आपण जानि परिबे को मासरे केते वैक्सीन कोन वैक्सीन दिया जाउची तो हेले then is produce intentional immunity and this prevents subsequent infections of the alimentary tract with wild strains of polio virus this vaccine also relatively inexpensive माने बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नुए ताको जणैबे कि एटा एक्सपेंसिव नुए आपन को पैसा रे किछि किनिबा को पड़िबोनी एटा फ्री ऑफ कॉस्ट रे दोउचंदी तो जाय कि राइट टाइम रे नै जानतु तो इट इज बी यूजफुल टू कंट्रोलिंग एपिडेमिक since it produces antibodies to fight virus quickly among the vaccinated तो आपण वैक्सीन नेला परे एंटीबॉडीज क्रिएट हला परे कोनोसी वायरस जदी एंट्री कला से एक्टिव हे परिबो नाही तार मेन मोटिव हला वैक्सीन रो किल्ड वैक्सीन it is inactivated vaccine given in injections it also contain all types of 3 types of polio virus तापरे हमें प्राइमरी इम्यूनाइजेशन कथा कहिबा केमती 3 डोजेस देबे ओरली प्लस इंट्रावेनस देन एजुकेशन हला एजुकेटेड करैबा केमिति राइट टाइम रे इम्यूनाइजेशन करिवे आ जो स्प्रेड जेमती होची पोलियोटा तो सेति पई कि तांको कहिबा डेंजरियस ऑफ द डिजीज मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज एडवांटेजेस ऑफ द इम्यूनाइजेशन आत्र पोलियो रहला सबटु बेस्ट हला इम्यूनाइजेशन तो हमें प्रथमे कहबा इम्यूनाइजेशन पई कि तांको मोटिवेट करिबा मैनेजमेंट ऑफ पोलियोमाइलाइटिस आ जोटा ब्लाइंड फेथ अछि हम जति किछ वैक्सीन लुचु ते आगु को एमती हबो बहुत जिंस एटा सब हुए तो सेटा को मध्ये आपण कहिबे कि वैक्सीन नेला परे हमर सब जाक जिंस वायरस गले भी इनएक्टिव हो जाए तो ए सब कॉम्प्लिकेशंस ता हबनी पैरालाइज जोटा ऑर्गन्स हे जिवो लाइफ लॉन्ग पैरालाइज्ड हे जिवे तो सेटा खराब आ जोटा कॉम्प्लिकेशंस ऑफ माइलाइटिस कहिबे ताको मोटिवेट ओनली करिवे कि वैक्सीन पे Then I will पढ़िबा malaria. Unit 17 हला malaria. Malaria has been limelight ever since about 90 years ago when Sir Ronald Ross showed how it is transmitted malaria.
रोनाल्ड रॉस सेटा इन्वेंटेड करथिले मलेरिया को माने मलेरिया फीवर को फर्स्ट बाहर करथिले कि कोन पई कि होची ए फीवरटा infectious disease caused by presence of parasitic protozoa of the genus Plasmodium within the RBC से प्रथमे देखिथिले RBC रु एटा ए जेनस टा आसीथिला Plasmodium तो सेटा गोटे parasitic protozoa सेटा वाटर कंटामिनेशन नहीं एटा सॉरी एटा ये प्रोटोजोआ माने हमर किछि इंसेक्ट्स बाइस टू हुए द डिजीज इज मेनली कन्फर्म टू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया जोड़ा सनसंतिया एरिया थांती जोटे कि पानी जमा हेकि रहिबा असना रहिबा तो सेही जगह रे ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया से बेसी देखा जाय थाए सेठी कोन हुए ना द डिजीज व्हाट कॉजेस हु गेट्स इट एंड हाउ डज इट स्प्रेड केमती स्प्रेड हुए एटा गोटे मस्किटो रु स्प्रेड हुए तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट एंड इट इज ट्रांसमिटेड बाय द एनोफिलिस मस्किटो माय एनोफिलिस मस्किटो थ्रू रे सेटा गोटे पैरासाइटिक सेटा हमरो कामुडिले हमर येरु रक्त रु स्प्रेड हुए द डिस्कशन बिलो मलेरिया अफेक्टेड बहुत सबु एज रो ग्रुप रे करि परबे जहा को मशा कामुडिबे इन्फेक्टेड पर्सन रो मशा कामुडी की गोटे हेल्दी पर्सन को कामुले ताको स्प्रेड हबो infants have considerably resistance to the infections with malaria. So males are more infected than female, mainly because they lead more outdoor life and likely to frequent areas where infected mosquitoes thrive. All females in India are better covered with claws. ସେଥିପାଇଁ କି କ'ଣ କରିବା ଆମେ ସବୁ ଯାକ ମାନେ ପୁରା ଓପନ୍ ବେୟାର ବଡିଜ୍ ନ ରଖିକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯୋଉଠି ବି ଯିବା ପୁରା ଫୁଲ୍ କଭର୍ଡ ଆମେ କ୍ଲୋଥ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବା ମାନେ ଫୁଲ୍ ହାତର ଡ୍ରେସ୍ ହଉ ଗୋଡ଼ ଯାଏଁ ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ହଉ ସେଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଶା ଆମକୁ କାମୁଡ଼ି ପାରିନଥାଏ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत मात्रा दायी कारण कंडीशंस आर पुअर एंड मलेरिया इज मोर प्रिवेलेंट माने रेशियोज निया जायछि ऑल वेंटिलेटेड एंड पुअरली लाइटेड प्रोवाइड आइडियाज रेस्टिंग प्लेसेस फॉर मस्किटो कारण मस्किटो सबले देखे जोठी की खरा पड़ेनी किछि भी पड़ेनी माने पूरा माने डार्क प्लेसेस मान करे जोठी जिंस पानी पानी जमिला तो सेठी मस्कार बा पैरासाइटिक प्रोटोजोआ सेठी माने प्रोडक्शन हुए बा सेठी से माने जन्म होंती तो सेठी पाई कि पुअरली लाइटेड प्रोवाइड आइडियल रेस्टिंग प्लेसेस फॉर मस्किटो तो इल वेंटिलेटेड एंड पुअरली मान सनसंतिया जगह जोटा मलेरिया आर कॉमनली एक्वायर्ड मस्किटो बाइट्स विद इन द हाउस कारण गोटे घरे से स्प्रेड हो जाए गोटे घरे से मशा समस्त कामुड़े से अफेक्टेड होती देन कंडीशन ट्राइबल एरियाज रे सराउंडेड बाय फॉरेस्ट फेवरेबल ग्राउंड्स ऑफ मस्किटो ब्रीडिंग माने जोठी सराउंडिंग बहुत अपरिष्कार थाए आउ जोठी गछ पत्र बहुत थाए पानी जमी थाए तो फॉरेस्ट एरिया मानकर बेसी देखा जाए तो मलेरिया कंट्रोल इन दिस एरियाज इज ऑफन डिफिकल्ट माइग्रेंट लेबरर्स एंड वर्किंग ऑन डैम्स जो मैंने काम करते इंजीनियर माइग्रेंट्स एग्रीकल्चरल लेबरर में इंपोर्टेंट मलेरिया कारण से माटी रे पानी फाणी जमिकी जोटे रही है से मशा स्प्रेड होती तो पानी एरिया मानकर बेसी हुए एरियाज वेयर इट हैज बीन अंडर कंट्रोल एनवायरमेंटल फैक्टर्स है सब सीजन रे मलेरिया मोर प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई टू नवेम्बर भितर तो आमर हाई टेम्परेचर एंड डिटरमिनेंटल पैरासाइट डेवलपमेंट सीजन तो सेठी कौन हुए ना वर्षा सीजन रे जेतबले सबुबले वर्षा हुए सब जगह भितर पानी जमे सेठी ही पैरासाइटिक माने प्रोडक्शन होती तो रेनफॉल है मस्किटो ब्रीडिंग जनरली इंक्रीजेस मस्किटो लिखी वर्षा आ पानी जमिकी रही हुए से वर्षा दिन में सब वर्षा होगी पानी जो जमी जीव कौटी डब्बा कौटी ये कौटी जगह मानक जमिकी रही से हम हेवी रेनफॉल तमाने रेनी सीजन टा है मोर प्रोन टू मलेरिया मैनमेड अल्टरेशन एनवायरमेंटल लाइक एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस जो माने मैनमेड रे जो इरिगेशन कि सब जो पानी रखिया जमिया कि पानी सप्लाई जो जिनस करन सेथरे मध्ये हुए गार्डन पूल्स एंड स्टैग्नेंट पोल्स ऑफ वाटर्स यूज कैन बी इंक्रीज मस्किटो ब्रीडिंग आम जोटी पानी आर्टिफिशियली रखी थाउ कि सेठी हमें किछु गोटे करिया एग्रीकल्चर ये रे तो सेटा भी हेता मैनमेड कि हेता एनवायरमेंटल हेता तो हाउ डज इट स्प्रेड केमती हबो ना मस्किटो स्प्रेड हेले जण कामुडले हबो ह्यूमन ब्लड कंटेनिंग मलेरिया पैरासाइट्स द फीमेल एनोफिलिस मस्किटो जोटा फीमेल एनोफिलिस मशा थाए से कौन करे गोटे माने जन को कामुडिले
से ये माने गोटे इन्फेक्टेड पर्सन रो गोटे भल पर्सन को से कामुड़ी की से रक्त द्वारा कंटामिनेशन होता है. The male and female unite in the stomach of the mosquito and multiply invade in the salivary gland. Stomach of the mosquito and multiply and then invade the salivary gland. When the mosquito bites the man, takes blood meals as parasite and injected in the bloodstream. Same रक्त द्वारा ये तको कामुड़ी की भल लोग कामुड़ले हबो. The liver cells ruptures and RBC destruction results in anemia. तो ସେଥିପାଇଁ କି ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା RBC ନଷ୍ଟ ହୁଏ. କେମିତି ନା liver cells ruptures liberating the new individual in the bloodstream. Some of these enter cells and से जो parasite ता ଆମ body रे enter करे से କ'ଣ करे liver cell को ruptures कराए. तो multiplication and development rapid multiplication of parasite result in destruction. तब से RBC को कारण जेहेतु liver cells को damage करे तो हमारा RBC मते destruction करे. फ्रेश ब्लड सेल्स को जाइए आरबीसी को नष्ट करे कारण जेहेतु जेटा माने कौन सेटा ब्लड ट्रांसमिटेड डिजीज टा तो गोटे रक्त को सुस्थ लोक को ए रक्तटा कामुड़ले तार स्प्रेड हुए तो से कि रेड ब्लड सेल टा को नष्ट करे. Anemia and stages of life of parasite the patient experiences periodic bout of shivering fever sweating कौन हुए ना हमरो जते ब्लड इन्फेक्शंस हला तो सेते बेले कौन हुए ज्वर फर्स्ट आसीबो बहुत स्वेटिंग हुए आउ पूरा माने कंप भलिया जंती हमको थरा उठे सेमती हुए. फ्रॉम द स्टेजेस सेक्सुअल फॉर्म जेमोसाइटिस एंड पैरासिटिक डेवलपमेंट which an injection of blood fed by an anopheles mosquito carry on the life cycle of the parasite in that insect. तापरे कौन हुए ना incubation period हला 10 days और malaria is transmitted by blood transfusion. There are 4 types of plasmodium species अच्छी 4 प्रकार अच्छी. B falciparum in 12 days and B vivax गोटे अच्छी B ovale अच्छी and 14 to 15 days month in the case of B malaria. Period of communicability रे अच्छी as long as the parasite are present in the blood of patients mosquito can be infected. जेपर्यंत तुम ब्लड रे से पैरासाइट टा अच्छी गोटे मशा आसिकी बहुत लोगों को स्प्रेड कर दे जे पारे गोटे लोक को आइसोलेटेड रखिया कथा. आइसोलेटेड माने आमे मशारी टंगे कि से सोइले ताकू मशा कामुड़ीबोनी और से मशा सुस्थ लोक जे कामुड़ी परिबोन सेति पई कि मशारी व्यवहार से टाइम रे मध्य दरकार. बिफोर जदी प्रिवेंटिव मेजर्स रे हमें नबा तबे आहुरी भलो जदी एफेक्टेड हे जे तबे भी ताकू मशारी रखिबा आइसोलेटेड फॉर्म रे किंतु हबार चांस बहुत अच्छी. Cold stage the patient will have fever or sudden onset of rigor बस shaking chills माने थरा है कि जो जरटा आसे. और hot stage रे patient complication sensation of burning and tries to take off all the clothes from him. Patient of splitting headache बहुत जोर मुंडा बंद बिंधे प्लस स्वेटिंग हुए. fever subsides accompanied by profuse sweating. जेतोले fever कमी जाए बा ये हे जाए डाउन हे जाए सेतोले प्रबल जोरे स्वेटिंग हेले बॉडी डिहाइड्रेट हुए. ସେଥିପାଇଁ କି ବହୁତ ସାରା ଲିକ୍विड आइटम्स ତାଙ୍କୁ ନବାକୁ ପଡ଼େ. ବହୁତ ସାରା ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼େ. କିଛି ଲିକ୍विड ଯେମିତି କୋକୋନଟ୍ ୱାଟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ବାଲାନ୍ସର ଜିନିଷ ଦେଲେ ବଡି ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ହେଇକି ରହିବ. ତ ତାପରେ after an interval free of disease fever the cycle of chills followed by fever and sweating is repeated either daily alternate day or every third day. If untreated the primary attack may last from a week to more than a month. Replaces occurs at irregular intervals for several years. Enlargement of spleen is common areas malaria is persistent. तो हमर कोन हुए spleen enlargement हे जाए anemic तो होंदी. 4 types of malarias are there. गोटे हला this serious is malignant Tatian malaria or falciparum malaria सेटा हला बहुत serious देखरा लोक डेथ करंती. Central nervous system leading to loss of oriental delivery and even lead to coma. तो central nervous system तांको माने तांको ऑर्डर दिए कि सेटरे कोन हुए ना टोटल बॉडी कोमा स्टेज को पळाइबा टोटल बॉडी रा माने अनकॉन्शियस हे जाय पेशेंट. तो सेटा हला बेसी माने सीरियस फॉर्म ऑफ मलेरिया हला falciparum malaria. The other human malaria hella benign tertian and vibus quatran bowel are not dangerous as lead to death except perhaps in very young children रे देखा जाए कि आमे जति तार ट्रीटमेंट रो अवहेला करू निहाती डेथ हबो. कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मलेरिया हला cerebral
malaria বা মস্তিষ্ক ম্যালেরিয়া যেটা ব্রেন ম্যালেরিয়া কহা যায় the falciparum malaria the patients may have convulsions fits and up to coma तो ସେଇଠି କ'ଣ ହୁଏ ସେରିବ୍ରାଲ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ବା ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କୁମାସ କାରଣ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ବଡିକୁ ମାନେ ଇନଆକ୍ଟିଭ କରିଦେଇଥାଏ ବା ଯେମିତି ପ୍ୟାରାଲାଇଜ୍ ଫର୍ମରେ କରେ ତ ସେଥିପାଇଁ କୋମାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଫ୍ୟାଟାଲିଟି ଇଜ୍ ଭେରି ହାଇ ଇନ୍ ସଚ୍ କେସେସ୍ Diarrhea and malnutrition also considered to be common complications of malaria. Chronic anemia is common in children with malaria. तो निहाती गोटे भल ब्लड रे जदि ट्रांसमिशन फॉर्म रे जदि गोटे हमर पैरासाइटिक ग्रोथ हैला बा मलेरिया जोटा गला सेटा एनीमिक करिवो कारण आरबीसी को नष्ट करे तो एनीमिक हैला परे भी ଆମର ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ସେଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏନିମିକ୍ ପାଇଁକି ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ବେଳେବେଳେ ହୁଏ ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ଜଣଙ୍କର କ୍ରନିକ୍ ଡାଇରିଆ ହେଇଯାଏ ସେଇଠୁ ମାଲନରିଶ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଆପିଟାଇଟ୍ ନିହାତି କମିଯାଏ ତ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ସରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା Prevention and control of malaria may be depend on control of mosquito through spraying insecticide like DNHE or malathion active passive surveillance of area माने आमे कोन करबा मस्कार जो तेल स्प्रेड करंती सेटा स्प्रेड करबा एनवायरनमेंट क्लीन रखिबा तापरे कोन हबो ना मस्किटो नेट यूज करबा स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स DDT एटा सब यूज माने स्प्रे करबा एक्टिव सर्वेलेंस माने वन हेल्थ वर्कर विजिट इच माने आमे कोन करबा एक्टिव सर्वेलेंस माने हेल्थ वर्कर मानन को विजिट करबा से घरे केते लोक अछंदी कि मलेरिया रे अफेक्टेड अछंदी कंजेस्टिंग 1000 हाउसहोल्ड इन एवरी फोर्टनाइट तांको विजिट करिके तांकर देखिबा तो तापरे ये डिस्ट्रीब्यूट द डोज ऑफ 4 टैबलेट्स ऑफ क्लोरोक्विन तो सेही अनुसार हमें मलेरिया रो माने ट्रीटमेंट रो जो मेडिकेशंस अछि तांको दबा घरे केते जण अफेक्टेड अछंदी कोन अछंदी हमें तांको दबा दिस इज नोन एज प्री अज्यूमेटिव ट्रीटमेंट रेडियल ट्रीटमेंट हैला इफ द ब्लड फॉर्म इज पॉजिटिव appropriate रेडियल ट्रीटमेंट इज गिवन क्लोरोक्विन टैबलेट्स प्रोटेक्शन अगेन मस्किटो पाएंगे तांको कोन करबा ना ब्रीडिंग ऑफ मस्किटो डू अ कंडीशन व्हिच रेंडर पॉसिबल द ब्रीडिंग मस्किटोस डिस्ट्रॉयज मस्किटो एज पीरियड ऑफ द लाइफ spraying of DDT सबडे और spraying kerosene oil diesel fuel of the stagnant water जोटी पानी जमी के रहिथिबो सेठी आमे DDT स्प्रे करबा नले kerosene oil diesel ए सब जिंस ऑयल ये करले तांकर दिस suffocates the larva जोटा माने से माने ब्रीड टा को देई थांती तो सेटा सब सेठी डिस्ट्रॉय हो जांती तनु करी तेल स्प्रेड कर दियंती पानी जमी थिबा जगह रे पानी larvae fish into pool of water where mosquito breed. To prevent the mosquito biting the man, endemic area, person must advise to sleep under mosquito net. Mosquito net निहाती भाबरे समस्त यूज करिया दरकार आमे घर घर सर्वे करिके कहार माने जोटा मलेरिया प्रोन एरिया जोटा अछि तो सेठी केम DDT स्प्रे करबा ऑयल स्प्रे करबा स्टैग्नेंट जोठी अछि सेठी भी माने समान करदा पानी फानी जोठी जमी थिबो तो सेठी निहाती भाबरे हमरो से ब्रीड गडा माने लार्भारडा बहुत थिबो जोटा कि लक्ष मात्रा रे माने मस्किटो जनरेट हेबे सेठी सब ऑयल फॉयल स्प्रे करबा मस्किटो नेट यूज करबा एनवायरनमेंट क्लीन रखिबा then circulate in the blood of man to attack the parasite as it circulate in the blood of man anti malarial drugs chloroquine हला आउडा पैरामेथामाइन सेटा सब यूज करबा घर घर जे तांको दबा कि स्प्रेड न होबा पे माने से तांकर भीतर पैरासाइटिक ग्रोथ न होबा पे मैनेजमेंट ऑफ ये रे तो क्लोरोक्विन टैबलेट इज रिकमेंडेड आ ता छडा हमें ए सब जिंस ओडा को क्लीन करबा स्किन आई यूनिट 18 हला स्किन आई ईयर इन्फेक्शंस कोन देखिबा स्किन इन्फेक्शंस केमती हुए ना skin infections are more important public health problem in our country most of the skin diseases can be attributed to bad personal hygiene of the आपण माने जानि थिबे skin disease केमती हुए ना हम जदी पर्सनल एक्सटर्नल हाइजीन जदी हम मेंटेन न करू हम जदी सब दिन नगा धैबा तो सेठी हमरो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप करिवे तापरे हमरो कोन होबो ना सेठी हमरो इचिंग स्टार्ट होबो इचिंग स्टार्ट हला परे स्किन रो जतबळे इचिंग स्टार्ट हुए तो सेठी जदी किछि खरोच टाइप रो आसिला तो तापरे सेठी माने हमरो किछि इन्फेक्शन फंगल हो ये हो इन्फेक्शन स्टार्ट होय सेनो पर्सनल
हाइजीन टा बहुत दरकार. वन ऑफ द रीजन ऑफ दिस पार्ट फ्रॉम द इग्नोरेंस लैक ऑफ एडिक्वेट वाटर फॉर वॉशिंग एंड बाथिंग जो माने कि भलरे वॉशिंग आ गाधांतिनी कि धुआ धुई होंतिनी जो माने सही अभाव रखती तो से मानकु बेसी हुए सेटा कोठी हुए पर्टिकुलरली रूरल एरियाज एंड अर्बन स्लम्स अर्बन रो स्लम्स माने जो माने रहउचंदी माने बेसी नीट एंड क्लीन कारण ड्यू टू इग्नोरेंस बा लैक ऑफ एजुकेशन lead to infection of vital organs such as kidney. So, since some of the skin infections can lead to infection vital organs such as kidney. Kidney है excretory organ से सब हमारा body internal को clean करे. तो ସେଥିପାଇଁ skin infection may due to bacterial infection for example boil impetigo. तो ये सब जिनस माने छोट छोट boil है कि हमारा bacterial infection हुए fungal infection ला ringworm type रो गोल गोल एमती है कि हुए. Insect infestations like scabies जोड़ा जदि किसी insects हमको किसी bite कला तो तादर infections है कि भी हमारा skin रो eruptions हुए eczematous dermatitis rash माने eczema जोड़ा हुए तो ये सब जिनस हमारा skin infections रो types तो bacterial infections रे हमारा कौन हुए non parasitic harmless and mutually beneficial organism with live together normal skin रे हमारा सेटा हुए and bacterial रे हमारा streptococcus and स्टेफाइलोकोकी एंड स्ट्रेप्टोकोकी दीटा जाक बैक्टीरिया दायी रुहंती एंड नॉर्मली नॉन वेरुलेंट नॉन पैथोजेनिक तो हेता है तो इम्पेडोगा द बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टार्ट एज रेड मैकुलर एंड स्मॉल एरिया डिस्कलरेशन ऑफ द रेड ब्लिस्टर्स हो जाय थाए फिनोराकुलोसिस टा हुए तो ठीक अछि नेक्स्ट क्लास रे बाकी रिमेनिंग 5 एंड 6 टा कंप्लीट करबा थैंक यू ओके मैम थैंक यू मैम Thank you, ma'am. Thank you.